Assalamualaikum students, welcome back to the channel. If you are preparing for the HSC LAT exam 2026, then this video is a must watch. Today we will solve 30 of the most important Islamiyat MCQs that are frequently asked in the LAT exam and other university entry tests. Each question comes with the correct answer and a short explanation to help you understand the concept instead of just memorizing it. So grab a pen and paper, pause the video after each question and test your knowledge. Let's see how many answers you can get right. Let's begin with the first MCQ. Question number 1 is the first revelation was revealed in. First revelation जो reveal हुई मक्का में हुई. First revelation was revealed in Makkah. The first revelation was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira near Makkah. मक्का के करीब जो है वो गारे हीरा में जो है वो फर्स्ट रेवोल्यूशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो रिवील हुई. क्वेश्चन नंबर 2 है विच सूरा वाज फर्स्ट रिवील्ड. कौन सी सूरा जो है वो कौन सी पहली सूरा है जो रिवील हुई. सूरा अल-अल्क. The first 5 verses of Surah Al-Alq were the first revelation. Question number 3 है How many pillars of Islam are there? 5 pillars हैं. The 5 pillars are शहादा, सलात, ज़का, फास्टिंग एंड हज. इस्लाम के जो हैं ये 5 pillars हैं. Question number 4 है The migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina is called Hijrah. The Islamic calendar begins with the event of Hijrah. Question number 5 है Which battle is known as the first major battle in Islam? कौन सी battle है जो कि major battle हुई इस्लाम में? Battle of Badr. The Battle of Badr took place in 624 CE and was a significant victory for Muslims. Question number 6 है How many surahs are there in the Holy Quran? Holy Quran में जो surahs हैं ये है 114. The Holy Quran consists of 114 surahs. क्वेश्चन नंबर 7 है विच प्रॉफिट इज़ नाउन एज द फादर ऑफ प्रॉफिट्स. तो ये है प्रॉफिट इब्राहिम. प्रॉफिट इब्राहिम को जो है फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है. मैनी प्रॉफिट्स केम थ्रू द लीनिएज ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 8 है ज़कात इज़ जनरली पेड एट व्हाट रेट ऑन एलिजिबल वेल्थ. वेल्थ पर जो है कितने परसेंट जो है ज़कात एलिजिबल है. ये है 2.5%. The standard rate of zakat on savings and wealth is 2.5% after meeting nisab conditions. The last revealed surah of the Holy Quran is commonly considered Surah An-Nasr. Many scholars consider Surah Nasr among the last complete surah revealed. Question number 10 है The Holy Quran was compiled into a book from during the caliphate of Hazrat Abu Bakr Raziallahu anhu. The Quran was first compiled into a single manuscript during the caliphate of Hazrat Abu Bakr Raziallahu anhu, while standardized copies were distributed during the Hazrat Uthman Raziallahu anhu. Question number 11 How many months are mentioned by the name in the Holy Quran? कितने मंथ्स हैं जो कि अब बाय नेम जो है वो कुरान में मेंशन किए गए हैं. तो ये है 1. एक मंथ है जिसको अपने नाम से जो है वो मेंशन किया गया है वो है रमज़ान. Ramadan is the only month mentioned by name. Question number 12 Zakah is obligatory on Muslims who possess wealth above the nisab. Nisab is the minimum amount of wealth required before Zakah becomes obligatory. Question number 13 Which wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was known mother of the believers and was the daughter of Abu Bakr? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी वाइफ हैं जिनको मदर ऑफ़ द बिलीवर्स जो है वो कहा जाता है और डॉटर ऑफ अबू बकर. ये हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा. आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नरेटेड मैनी ऑथेंटिक हदायत. क्वेश्चन नंबर 14 है द होली कुरान was compiled into one book during the caliphate of Abu Bakr रज़ी अल्लाह अन्हा. It was first compiled under Abu Bakr रज़ी अल्लाह अन्हा after the battle of Yamama. Question number 15 The standard copies of the Quran were distributed during the caliphate of Uthman Raziallahu anhu. Uthman Raziallahu anhu standardized the Quranic text. Question number 16 Which prophet built the Kaaba with his son Ismail Raziallahu anhu? इसका है ऑप्शन बी इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु. Ibrahim Islam. Allah commanded Prophet Ibrahim Islam and his son Ismail Islam to rebuild the Kaaba in Makkah, making it the center of Islamic worship. Question number 17 How many obligatory prayers do Muslims offer every day?
हर रोज़ जो है मुसलमान कितनी इबादत जो है वो अदा करते हैं, ये है 5। द 5 डेली प्रेयर्स आर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब एंड इशा। दे आर वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 18, द मिरेकुलस नाइट जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड Isra and Miraj. During Isra and Miraj, the Prophet ﷺ traveled from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa and then ascended to the heavens by Allah's command. Question number 19. Who was the first caliph of Islam? ये है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु. Hazrat Abu Bakr Razi Anhu became the first rightly guided caliph after the passing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Question number 20 है, the last sermon of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was delivered during farewell Hajj. The last sermon emphasized equality, justice, human rights, and the importance of following the Quran and Sunnah. Question number 21 है, how many Makki surahs are there in the Holy Quran? यह है 86. There are 86 Makki surahs revealed before the Hijrah and 28 Madni surahs revealed after the Hijrah. Question number 22. How many Madni surahs are there in the Holy Quran? होली कुरान में जो है वो मदनी सूराज की जो तादाद है वो है 28. मदनी सूराज मेनली डिस्कस लॉज, सोशल लाइफ एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 23 है, विच सूरा इज नाउन एज द हार्ट ऑफ द कुरान? ये सबसे ज़्यादा आने वाला जो है इस्लामियत का सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी बार जो है पहले भी लैट में आ चुका है और इसके चांसेस है कि ये आ सकता है. विच सूरा इज़ नाउन एज द हार्ट ऑफ द कुरान? यह है सूरा यासीन. सूरा यासीन इज़ वाइडली रेफर्ड टू एज द हार्ट ऑफ द कुरान इन इस्लामिक ट्रेडिशन एंड इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एंट्री टेस्ट. ये जो है लैट के और जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है. क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान? होली कुरान में जो है वो लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? ये है अल बकरा. सूरा अल बकरा इज़ द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द कुरान containing 286 verses. क्वेश्चन नंबर 25, विच सूरा बिलोंग्स विदाउट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम? अल तूबा. सूरा अल तूबा is the only surah that does not begin with Bismillah. Question number 26. How many fards rakas are there in the Fajr prayer? ये है 2. Fajr prayer consists of 2 fards rakas offered before sunrise. Question number 27 है, the Holy Quran was revealed over a period of approximately 23 years. Beginning in Makkah and continuing. Question number 28 है, what was the first Qibla of the Muslim? Masjid al-Aqsa. Muslims initially faced Masjid al-Aqsa in prayer before Allah commanded the change of Qibla to the Kaaba. Question number 29 है, which companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is known as Safiullah, the sword of Allah? sword of Allah का मतलब है कि अल्लाह की तलवार जो है वो कौन से कंपेनियन थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको जो है वो sword of Allah, अल्लाह की तलवार कहा जाता है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु. Hazrat Khalid bin Walid Razi Anhu earned the title Safiullah because of his remarkable military leadership and victories in defending Islam. Question number 30 है, the most important and repeated question in LAT and every entry test. Question number 30. Which surah is known as Ummul Kitab, the mother of the book? मदर ऑफ द बुक जो है वो किस सूरा को कहा जाता है? तो ये है सूरा अल फातिहा. सूरा अल फातिहा इज कॉल्ड उम्मुल किताब because it is the opening chapter of the Holy Quran and is recited in every unit rakat of Salah. It summarizes the core message of faith and guidance, making it one of the most frequently tested topic in LAT and other entry exams. That's all for today's 30 most important LAT Islamic MCQs. I hope this question helped you strengthen your preparation for the HEC LAT exam 2026. Keep practicing every day because consistent revision is the key to achieving a high score. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. Also press the bell icon so you never miss our upcoming videos. In the comments below, tell us how many MCQs you answered correctly out of 30. Stay connected because our next video will cover English, general knowledge, Pakistan affairs, Urdu, mathematics and full LAT mock test with detailed explanation. Best of luck for your LAT exam 2026. Allah Hafiz.